Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Manan Majid. The subject which I am going to teach you is classical mechanics. I am lecturer at University of Education, Lahore, Multan campus. My email address is manan.majid, manan.majid@ue.edu.pk. The course code of classical mechanics is PHYS 3125. The course outline of classical mechanics consists of 4 chapters, which is Lagrangian formulation, center force problem, Hamiltonian formation, and conical transformation. In the first chapter, we will discuss brief survey of Newtonian mechanics of single and system particles, concentrates, D'Alembert principle, Lagrangian equation and its application, calculus of variation, and Hamiltonian principle. Derivative of Lagrange's equation for Hamilton principle. Contact transformations. Second chapter consists of two-body center force problem and its reduction to the equivalent one-body problem. The equation of motion and solution of for one-body problem, laboratory, and center of mass coordinate systems and their mutual transformation. Rutherford scattering form. The third chapter, which is Hamiltonian formation, consists of Legendre's transformation and Hamiltonian equation of motion, cyclic coordinates, conservation theorems, and physical significance of Hamiltonian for simple cases. The last chapter, which is conical transformation, consists of the conical transformations and their examples, the Lagrange's and Poisson's brackets, integral of motion, and the last topic is Poisson's theorems. The recommended books are The Introduction of Classical Mechanics by David Morian, Classical Mechanics by John Taylor, Classical Mechanics of Goldstein, Classical Mechanics by Thai Chow, and there is another book, Classical Mechanics by G. Ardoulas, Ardulhas. These books are already uploaded in the Google Classroom. You can read, download and read these books for some references. First of all, we will discuss basics of Newtonian mechanics. क्या हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जितना आज तक हम पढ़ते हैं, देखते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते आए हैं और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बेस के ऊपर सॉल्व करते आए हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आज तक हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कन्वर्जेंस, लॉ ऑफ कन्वर्जन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हम उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफली हम उसको गो थ्रू करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा रिकॉल हो जाए चीज़ें और उन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकें। The first one is coordinate system. There are basically 4 coordinate systems. Cartesian coordinate, which is represented by x, y, z. Plane polar coordinates, represented by r, theta. Cylindrical coordinates, rho, phi, z.
spherical polar coordinates represented by r theta phi. किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए. अगर टू प्लेन के अंदर है, टू डायमेंशंस के अंदर है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है. अगर हम थ्री स्पेस में चले जाते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में चले जाते हैं, तो हमारे पास जी एक्सिस भी इंक्लूड हो जाता है, एक्स वाई सी. तो उस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी, कि वो पार्टिकल किस पॉइंट में मौजूद हुआ है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. जैसे आपको डायग्राम शो हो रही है, पे इज द पॉइंट of a particle having x, y, z are the Cartesian coordinates, and r is the position vector of the any particle in x, y, z plane, making an angle theta with the horizon. Now, if the particle in two dimension, we require only position vector, which is r, and the angle from the base axis from the horizontal, you can say. The cylindrical coordinates and the spherical polar coordinates, they are rho, phi, z. Rho is the projection of OP, or we can say that the projection of r vector in xy plane, which is equal to OQ as shown in the figure, will be equal to r sine theta, or we also can say that OQ is equal to rho. Theta is the angle and phi is the angle between the position vector and the third axis, which is x. लिहाजा इन तीन पॉइंट्स की मदद से हम किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी पोजीशन, डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम तीन कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं. इन्हीं की मदद से हम बाकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस, एंगल्स और डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. Laws of motion. There are basically three laws of motion, or we can say Newton's laws of motion. The first law is, which is also known as law of inertia. P is equal to mv. मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो mv के इक्वल होता है, मींस के प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के इक्वल होता है. और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल की क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में हमें बताता है. According to the first law of motion, in the absence of external force, P is equal to mv is equal to constant. मींस अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तब उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व करेगा. And the second law of motion, which is equal to m, F is equal to ma, force is equal to ma. It means a body, if a body exerts a force on a particle, or we can say that if a force is applied on a particle,
the force is directly proportional to the acceleration produced by that force, and that acceleration of the body is inversely proportional to the mass of the object which is moving. जब किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके जो एक्सेलरेशन होगा वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस इक्वेशन को हम ये भी बोलते हैं कि मास इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मोशन, कि अगर एक every action has its direction but opposite in direction, or we can say that if a body exerts a force on the second body, the second body also exerts an equal and opposite force on the first one, which is clear from the equation F12 is equal to F21 with minus sign. Here F1 is the first particle applying force on the second object, and which is equal to the F21 second force of the second mass or second particle applied on the first one, which will also which are equal, and minus sign represent the opposite direction. अगर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखें कि अगर हम कोई बॉल को दीवार के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद दीवार पे मारते हैं, तो जो हमारा एक्शन है बॉल के ऊपर ऑन द वॉल, दिस इज इक्वल टू F12, बट उसी स्पीड जब बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द वॉल, बॉल उसी स्पीड के साथ वापस बाईं तरफ पलटती है, which is equal to F21 but opposite in direction. Now we will discuss the frame of references. Frame of references basically किसी भी पोजीशन को बताने के लिए कि वो पार्टिकल किस जगह पे मौजूद है, किस सिस्टम के अंदर मौजूद है, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference, in which Newton's law of inertia hold, other law also valid in inertial frame of reference. Acceleration of inertial frame is zero, or we can say that moving with constant velocity. Any reference frame moving with constant velocity with respect to an inertial frame is also an inertial frame. ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ होल्ड करता हो, मींस लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता हो, दूसरे लॉ भी उसके अंदर वैलिड हो, और एक्सेलरेशन जीरो हो, मींस ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रही, ऐसा सिस्टम हो, तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कहलाएगा। हम अगर एग्जांपल देखी जाए, अर्थ is basically we consider it as our inertial frame of reference. It means a constant velocity से move कर रही है, इसका acceleration we consider that कि इसका acceleration constant है, और means कि we consider कि velocity constant है, acceleration क्या है इसका zero है, तो हम अर्थ को consider करते हैं
that is inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference, where law of inertia does not hold and frame moving with some acceleration. कोई भी फ्रेम अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता और वी कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता, तो उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। वो कोई भी फ्रेम हो सकता है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। Mechanics of particles. In this section we discuss the law of conservation for our particles in motion. इस सेक्शन के अंदर हम कुछ लॉज ऑफ कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे फॉर अ पार्टिकल। कोई पार्टिकल है अगर वो मोशन के अंदर है तो उसके अंदर कुछ जो लॉ वैलिड होते हैं, तो हम उसको इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, F is equal to dp/dt, which is also known as the second law of motion. If no external force is acting on the particle, rate of change of momentum is constant with respect to time. If the total force acting on the particle is zero, then the linear momentum is conserved. यही हम पहले डिस्कस करके आए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। The second is law of conservation of angular momentum. If the torque acting on the particle is zero, किसी ऑब्जेक्ट का जो टॉर्क है वो जीरो होगा, देन उस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा, वो चेंज नहीं हो रहा। अब एग्जांपल देखी जाए, all the planets moving around the sun and satellites around the earth के एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये दोनों चीजें अभी जब पहले हम डिस्कस करके हटे हैं। दीज आर द फॉर द सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्टिकल, तो उसके अंदर लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो हम देख रहे थे। बट इसी तरीके से अगर हमारे पास कैसा सिस्टम आता है इसके अंदर मोर देन वन पार्टिकल हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स available as I show in the figure, where we have number of particles in xy plane having masses m1 represented by the position vector r1, which is the distance from the origin, and mass m2 represented by r2, and so on. The mass of the ith particle in a system represented by the position vector ri, and C is the center of mass of the system of particles represented by the position vector capital R. यह सिस्टम दिखाया गया है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट मैसेज के मैस सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उनका एक सेंटर ऑफ मैस है। Center of mass is basically is a point where all the mass of the system is concentrated, कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरे सिस्टम का मैस कॉन्सेंट्रेट करता हो, अमल करता हो, एक्ट करता हो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस बोलते हैं। और सेंटर ऑफ मैस को रिप्रेजेंट करने वाले को
जो पोजीशन वेक्टर होगा that is called position vector of center of mass, which is represented by capital R and can be calculated as m1 r1 plus m2 r2 plus on mi ri, means product of all the masses and their distance from the origin, and taking sum of all these divided by the sum of all the masses consist in that system, which is represented by capital M. Law of conservation of linear momentum. In system of particle, here Fe is equal to sigma Fij is equal to dp by dt is equal to m d square r over dt square. F is E is equal to external force acting on the system, and Fi is the sum of all the internal forces. Here we assume that the third law is valid for the internal forces and Fij is equal to minus Fj. कि ऐसा सिस्टम है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर तमाम पार्टिकल्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, which is represented by sigma Fij, and P is the momentum of the center of mass, and M is the mass of the system, whole system. So as we already say that third law is valid, means कि जितने particles force apply कर रहे होंगे दूसरे particles के ऊपर, similarly दूसरे particles भी उनके ऊपर force apply कर रहे होंगे. For example, one particle force apply कर second particle पर, second particle भी उतनी ही force first particle के ऊपर apply करेगा, जिसको हम represent कर रहे हैं phi j से, और वो opposite direction के अंदर होगा, which is represented by minus sign. So ये आपस में equal होते हैं, तो हम इसको neglect कर सकते हैं. We can say that sum of all the forces will be equal to 0, internal forces. So after simplification, we have Fe is equal to dP by dt is equal to m d square r over dt square. Law of conservation of angular moment. Tau is equal to change in angular momentum with respect to time, and kinetic energy of system of particle will be equal to 1 over 2 m v center of mass plus 1 over 2 sigma m I v I dash square. Here the equation of kinetic energy consists of two parts. The first part is kinetic energy obtained if all the masses were concentrated at center of mass, and second part is kinetic energy of motion about center of mass. जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें बताता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड द सेकंड पार्ट है वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि दूसरे पार्टिकल्स की अबाउट सेंटर ऑफ मास पॉइंट के जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट करता है. Why Lagrangian method? Why even use a Newtonian approach at all when the Lagrangian approach seems so much simpler, mechanics and powerful? Most of question ये arise होता है
कि न्यूटोनियन अप्रोच को क्यों नहीं यूज करते एज कंपेयर टू लैग्रांजियन, जो कि सिंपल भी है और पावरफुल भी है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन इस दिन में आता है, but the answer is the strength of the Lagrangian approach to solving is based on its ability to deal with the scalar functions, whereas Newtonian mechanics is based on the use of vector quantities such as force and momentum. When problems are not too complex, the Newtonian method is relatively straightforward to apply, but as their complexity increases, solving problems with the Lagrangian approach begins to show its point. अब इस क्वेश्चन का आंसर कि हम लैग्रांजियन अप्रोच क्यों यूज करते हैं एज कंपेयर टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हम क्यों प्रेफर करते हैं, इसका बेसिक सिंपल आंसर यही है कि लैग्रांजियन से हम स्केलर क्वांटिटीज डील करते हैं, जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन अप्रोच है वो डील करती है वेक्टर क्वांटिटीज से। सो जब सिंपल अगर सिस्टम सिंगल पार्टिकल सिस्टम होगा तब तो इजीली हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अप्रोच कर लेंगे, इसे यूज कर लेंगे न्यूटोनियन अप्रोच को। बट अगर सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम लैग्रांजियन को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। The second reason, the Lagrangian approach is particularly powerful when dealing with the conservative system for which one only wish to generate its equation of motion. Force of concentrates are not an issue, indeed the standard Lagrangian formation ignores them. कि लैग्रांजियन अप्रोच का यूज करते हुए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम ड्राइव करते हैं बेसिक हमारा मकसद ये होता है, बट इसके अंदर कहते हैं कि फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट आर नॉट एन इशू। अब फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स क्या होती हैं ये हम आगे आके डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि लैग्रांजियन अप्रोच इज मोर helpful than the Newtonian mechanics. There are some examples, or we can say there are some questions जिनको मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है by using your basic concepts. हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस की जा सकती हैं, बट सिंपल चीज़ें हैं। मैं आपको हिंट देता जाऊंगा हर क्वेश्चंस का, आप इसे अपने एंड पे सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होगी। पहले वन है, इज द फोर्स ए आर इज कंजर्वेटिव, we can say that a force is conserved. A force conserved, क्वेश्चन, अब कंजर्व फोर्स कौन सी होती है, which is जिसका डेल अगर हम लिए उस फोर्स का तो वो इक्वल टू जीरो ना हो। अगर आपने डेल क्रॉस एफ, आपने इस फोर्स का फोर्स है आपके पास ए, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो सकता है आपके पास, और द पोजीशन वेक्टर्स, तो आपने डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करना। अगर तो वो इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, इट्स मीन कि फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव। बट अगर वो इक्वल टू डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो आपके पास आ जाता है
तो आप कह सकते हैं डॉ ये चीज़ क्या आपके पास force is conservative. This is a basic question from the mechanics one, which you already study in the first semester. The second example is a rolling motion. Rolling motion स्टूडेंट्स ने मैकेनिक्स वन के अंदर बेसिकली हम दो डिस्कस करते हैं. उसके अंदर हम एग्जांपल देते हैं मोशन ऑफ अ रोलिंग मोशन ऑफ अ डिस्क ऑन अ प्लैंक एंड यो-यो. हम इनके अंदर उनका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. बस ये वही चीज़ है, उसी को हम बताया हुआ है. इसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. इसके अंदर भी आपने एक्सेलरेशन डिस्क का कैलकुलेट करना है और फ्रिक्शनल फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है. एक डिस्क जिसका मास एम जो वेट mg है रोल करती आ रही है प्लैंक के ऊपर विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. वेट डाउनवर्ड है और उसका जो डायरेक्शन है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया. एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स. अब इसके अंदर भी हम उसी तरीके से सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे विचुअली इक्वल टू अगर हम मास है वेट है, वेट का अगर हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लें तो एक्स कंपोनेंट तो आपके डायरेक्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट रिमेनिंग बचेगा जिसको हम कहेंगे एम जी साइन थीटा के, विच इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्पफुल होता है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो जो नेट फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही होगी सिस्टम के ऊपर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ से आपके पास फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी. उसके बाद आप इसका इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू 3/2 m r का स्क्वायर होगा. टॉर्क टॉर्क दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करके टॉ इज इक्वल टू dl/dt जैसे कि फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, और जो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है r क्रॉस f. दोनों से आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद एक्सेलरेशन निकल आएगा आपके पास विच इज इक्वल टू 2/3 g साइन थीटा के होगा. तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं. सिर्फ आपको रिकॉल के लिए मैंने ये एग्जांपल दिए ताकि आपको थोड़ा सा आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए और आप मुझे भी पता चले कि आपको चीज़ समझ आ गई है. तो बस इसको यूज एक्सेशन आपके पास आ जाएगा. उसके बाद जो फर्स्ट आपके पास फोर्स की इक्वेशन निकली होगी उसके अंदर एक्सेशन की वैल्यू पुट करके तो आप वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. In the third example, which consists of a number of masses having 1, 2 and 4 kilograms moves under a force such that their position vectors at time t are respectively r1, r2 and r3. Calculate क्या करना है आपने? Find the angular moment of the system about the origin at time t is equal to 0. t is equal to 0 के ऊपर आपने इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना. इसको यूज करने के लिए सिंपल आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और वी कैन सेट आर क्रॉस एम आर आई डॉट के इक्वल होगा. जो आर डॉट होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. तो इसको हम तीन पार्टिकल्स के लिए मैस भी आपको अवेलेबल है. तो फर्स्ट मैस को आप उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड मैस को उसके पोजीशन वेक्टर से, सेकंड एंड थर्ड मैस को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन एक बन जाएगी. और वहाँ पे इसके अंदर आपका टी जो एक वेरिएबल है वो आपका सारा होगा. अगर उसको टी की वैल्यू टी इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आप फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम को. बस यही ये एग्जांपल्स है by using all the formulas which already we have discussed
in this lecture. Here there are some questions. First one is, what is the center of mass frame of reference? Explain the principle of rocket. What is meant by the thrust and rocket of our rocket? On what factor does thrust depends? Show that the center of mass of system of particle moves as if the total external force for acting on the entire mass of the system concentrated at the center of mass. इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देखिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. इसका आंसर आपको इन्हीं स्लाइड्स के अंदर मिल जाएगा. पहला क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या होता है. सेकेंडली, रॉकेट मोशन का प्रिंसिपल क्या होगा. थ्रस्ट ऑफ रॉकेट क्या होती है. और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, कोई रॉकेट मूव कर रहा होता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड्स करते हैं उसके ऊपर. किन किन फैक्टर्स की वजह से उसकी थ्रस्ट इंक्रीज होती है, कि उसके जो इंजेक्शन ऑफ फ्यूल्स हो रहा होता है उसके साथ उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. इक्वेशन है जो रॉकेट मोशन है, ये हम इंटर में भी हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद क्लास मैकेनिक्स 1 के अंदर इन द फर्स्ट सेमेस्टर भी हम इसे डिस्कस करते हैं. इसको आपने देखिएगा. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, अगर एक सिस्टम का है हमारे पास और उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है. जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होगी और जो वो एक्सटर्नल फोर्स है उसके सेंटर ऑफ मास को एक्ट कर रही होगी, देन आपने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. मींस आपने वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेट करनी है. इस चीज को आपने इंश्योर करना थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना. कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको डिस्कस करने के लिए. आप इसे देखिएगा. कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस आपकी लेक्चर के स्टार्ट के अंदर फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अवेलेबल है. तो बेसिकली ये फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली आज तक जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम देखते आए हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर फॉर द सिंगल पार्टिकल एंड फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम डिस्कस करते आए हैं, उसको हम सॉल्व करते आए हैं. उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक था. अब इसी को मदद से अब ये आपको थोड़ा से उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी. इन्हीं चीज़ों को हम लेके चलेंगे और हम जब डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर और लैग्रांजियन मैकेनिक्स या लैग्रांजियन अप्रोच के अंदर क्या डिफरेंस आता है, क्या हमारे लिए इजी मेथड्स हैं या क्या हम उसको किस तरीके से हम इजीली यूज कर सकते हैं लैग्रांजियन अप्रोच को. थैंक यू सो मच.